Sir, I'm a backbencher and I'm a tailender. I say this is all responsibility. The Prime Minister has been weakened. He has not been able to have a new cabinet, even though he's won for the third time. He has appointed the same ministers in the same portfolio. Had he chosen a member of this House as finance minister, that finance minister would have had the native intelligence of meeting constituents and understanding the problems of India, which is basically inflation and unemployment. Because this finance minister doesn't have a constituency, because this finance minister does not interact with people who go through daily problems of joblessness and price rise, this budget lacks empathy and compassion. I hope this finance minister, when she comes at 4 o'clock, doesn't compare herself with some of her predecessors who came from the other house. Their economic background is much different from hers. If she had empathy and sympathy and compassion, she would address the unemployment issue. There are 10 lakh vacancies in the government of India. This budget does not speak about filling those vacancies. The GST is a mess. The GST has been the multi-slab GST is the cause of inflation and price rise. She has not addressed it. In fact, they levy GST even on prosthetics and artificial limbs and motorized wheelchair, which basically means this government is levying a tax on walking. Sir, we are one of the most underinsured countries in the world. This government levies 18% GST on insurance premium for health and life. Shame, sir, shame. This has to be withdrawn in this budget, sir. Sir, further, there have been students who have taken student loans who can't repay it because of the unemployment crisis in India. There has been no waiver or write-off or relief for those who have taken student loans. And the ELI scheme, as best, is woolly, sir. Sir, this government has no compassion and no empathy because it's divorced from the realities of India. Even their core constituencies are now complaining about them because they've removed indexation. By removing indexation, what you have really done is you are not giving the benefit of buffering yourself against inflation. You go read the social media post. Your own core constituencies are criticizing you. This government is a fatigued government. This government has got malaise. This government has no new ideas and no freshness. And they talk about giving 17,500 rupees as tax relief. That translates to 47 rupees a day. I'm sorry to say, I'll come to this particular matter because it has a relevance to one of the honorable members. Harvard and Oxford educated leaders, UPA government was run by them for the economy, did not know when and how to withdraw the stimulus, leading to a high double-digit inflation between 2009 and 13, high fiscal deficit and debt, crowding out private investment. So between January 2012 and 2014, just the 22 months, of the total 28 months, 22 months the inflation was above 9%. Almost double digit and almost double of the forbearance limit that is permitted. Inflation के इनके रिकॉर्ड ही है सर, उसको बीट करना आसान नहीं है। इसीलिए मैं बात बोल रही हूँ, UPA sir, UPA inherited a stable macroeconomic environment with inflation at 3.8% from 1999-2000 to 2003-04. अटल जी के समय पर इन्फ्लेशन उस रेंज में पर था, उसको इनहेरिट किया UPA ने. Comparatively, annual inflation rose to 8.1% between 2004-05 to 2013-14. अटल जी का 3.8%, इनका 8.1%. यही है इनका रिकॉर्ड इन्फ्लेशन मैनेजमेंट के ऊपर. सर, एक्चुअली क्योंकि हमारे MP साहब ऑलरेडी एक स्लोगन दे रहे, मैं बोलना चाहती हूँ, मैं हिंदी इलाके से नहीं आती हूँ, फिर भी ये याद है, कांग्रेस आई महंगाई लाई, ये है इनका रिकॉर्ड. सर, because economy was in such poorly managed state because of inflation, I want to quote
want to quote, sir, RBI गवर्नर, उनका नाम नहीं ले रही हूं क्योंकि सदस्य नहीं है इधर, मगर वो एक किताब लिखे हैं। उस किताब में वो बोलते हैं, आई कोट, द फाइनेंस मिनिस्ट्री used to pressurize the RBI to soften interest rates and present a rosier picture of growth to shore up sentiments। क्योंकि आपके आर्थिक व्यवस्था इतना बिगड़ गई थी, आप आरबीआई को फोन करके उनको बोल रहे हैं कि प्लीज ठीक से मैनेज करो भैया, क्योंकि सेंटिमेंट अफेक्ट हो जाएगा। आप कुछ मैनेजमेंट नहीं किए, मगर ये किताब में फॉर्मर आरबीआई गवर्नर लिख रहे हैं सर इनका इकोनॉमी के मैनेजमेंट के ऊपर। शेम। वो हमें पूछते हैं कि इकोनॉमी कैसे मैनेज कर रहे हो सर। India's inflation between 2020-2023 is much lower than the global average. Prime Minister Modi, in spite of COVID, planned the economy in such a way that our inflation did not affect so badly. I want to just give you the list of the records, sir. NDA के समय 99 to 2004 तक 3.8, UPA 1 में 6%, UPA 2 में 10.2%, so UPA 1 and 2 put together 8.1%. अभी हम आ रहे हैं NDA 1 में 14-15 से लेकर इन्फ्लेशन 5 years में 4.5%, NDA 2 में 5.7%, NDA 1 and 2 put together 5.1%. कहाँ है 8.1%? हमारे 5.1% कहाँ है? मैं ये भी दुख के साथ कहना चाह रही हूँ, जब प्रधानमंत्री जी पेट्रोल और डीजल प्राइस को 2 बार कम किए, बीजेपी स्टेट्स ने कम किया, इन्फ्लेशन हटवाए, मगर यूपीए के स्टेट्स कोई कुछ नहीं किया। उसके वजह से उनके स्टेट में इन्फ्लेशन हाई रहा। देश के लिए नुकसानदायक पॉलिसी है यूपीए का। ठीक है, हम कैसे मैनेज किए इन्फ्लेशन? ग्रुप ऑफ सर, एनडीए गवर्नमेंट कैसे मैनेज कर रही है? ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा इन्फ्लेशन को मॉनिटर करते हुए सप्लाई साइड का हर स्टेप हर बार उठाते हैं। मैं उदाहरण देती हूं सर, भारत ब्रांड आटा, राइस और पल्सेस का विषय हमने खरीद करके सब्सिडी के साथ जनता को पहुंचा रहे हैं। भारत आटा at 27.50 रुपीस पर केजी, और लोग खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? बिल्कुल खरीद रहे हैं। 14.87 लाख टन्स have been sold for common public. भारत राइस 27.5 रुपीस पर केजी में चावल मिलता है और 13.98 लाख टन्स बिक्री हो गए हैं सर, लोग खरीद रहे हैं। भारत चना दाल 60 रुपीस पर केजी के 1 केजी का पैक 11.52 लाख टन सोल्ड हो गए। भारत मूंग दाल, बोथ मूंग दाल और साबुत मूंग दाल 2984.37 टन्स का सेल हो गया है। आम नागरिक तक हमारे भारत ब्रांड आटा पहुंच रही है, इसीलिए इन्फ्लेशन को वो फेस कर पा रहे हैं।